So the third point of special provisions for the states and areas is, अब हम this is the criticism of Article 370, ठीक है. So the Article 370 regarding जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी हमने पढ़ा कि उन जम्मू एंड कश्मीर के पास कई स्पेशल टाइप के प्रोविजंस दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, no financial emergency can be proclaimed in the country, in the state of Jammu and Kashmir without the permission of the state legislative assembly. Then कोई भी प्रकार की national emergency or on the basis of armed rebellion or external aggression cannot be proclaimed in the state of Jammu and Kashmir without the permission of the state legislative assembly. Then उनका separate constitution है, उनका separate flag है. Parliament has to take permission from the Jammu and Kashmir का state legislative assembly in order to make laws on a particular subject which is outside the instrument of accession. So ये सारे provisions they have been criticized by people. They have been criticized by various governments. So and the main aspect of that particular of Article 370 is that कि Article 370 remove ही नहीं कर सकते until and unless the Jammu and Kashmir की state legislative assembly नहीं allow कर देती. So इन सारी प्रोविजंस, द आर्टिकल 370 में जो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमें ऑब्वियसली हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी पीपल, मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेनी गवर्नमेंट्स व्हिच हैव कम एंड गॉन. सबने बहुत क्रिटिसाइज किया है. इवन स्कॉलर्स हैव क्रिटिसाइज्ड आर्टिकल 370 फॉर दीज रीजंस. ऑलराइट, सो द नंबर वन रीजन इज दैट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज उसको एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस दैट आर गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, हमें ये इम्प्रेशन मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ सेपरेट स्टेट, is completely separate and completely isolated from the rest of the country because of Article 370. Because Article 370 ने JNK को इतने स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, इससे हमें ये इम्प्रेशन मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट इज वेरी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, whereas बाकी सारे स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, दे ऑल हैव इक्वल प्रोविजंस, बट जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो दिया गया है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट काफी अलग है पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से. ठीक है. नाउ द सेकंड रीजन व्हाई इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इज दैट पीपल कीप टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो, जैसे हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितना डिसऑर्डर है, कितना केओस है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं, मिलिटेंसी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. And the main problem is that many of the leaders of Jammu and Kashmir itself, many leaders within Jammu and Kashmir, जो political leaders हैं, जो party leaders हैं, they keep demanding autonomy. They keep blaming the government for interfering in their particular matters, and they basically, the leaders who are demanding autonomy in Jammu and Kashmir, even after being provided with Article 370, they are saying कि इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की केंद्रीय सरकार है, वो बहुत इंटरफेयर करती है हमारे मामलों में. सो व्हाट दीज लीडर्स, व्हाट द JNK के लीडर्स वांट इज दैट ओनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये तीन सब्जेक्ट्स, only these three subjects should remain with the center, and बाकी सारे सब्जेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर को अपने परव्यू में लाने, वो दे वांट कि बाकी सारे सब्जेक्ट उनकी ऑटोनॉमी के बेसिस पे हो, कि दे शुड बी एबल टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस. सो दीज लीडर्स हैव ऑलवेज वांटेड दिस काइंड ऑफ ऑटोनॉमी. ठीक है. सो अब what this particular demand of the leaders has been criticized on is that they don't understand कि इस autonomy से financial needs won't be able, this particular autonomy will lead to the financial needs not being met in the state of Jammu and Kashmir. ठीक है. तो इनको ये सारी ऑटोनॉमी तो अगर दे भी दी जाए, तब भी उस स्टेट की फाइनेंशियल नीड्स नहीं मीट हो पाएंगी. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर point has been criticized. Okay, so the leaders demanding autonomy in the state of Jammu and Kashmir has been criticized for this very reason कि it won't be financially feasible. ठीक है. तो मतलब because वो इतनी freedom चाहते हैं अपनी country में, अपने state में, but वो freedom possible नहीं है
वो freedom possible नहीं है, because that freedom will come at a great financial cost. All right. So the third particular reason why the Article 370 has been criticized, which is probably the main thing, is Jammu and Kashmir constitutes our 1% of India's population. पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% जम्मू एंड कश्मीर में रहता है. बट जितने ग्रांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट्स को फंड्स ग्रांट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आउट फंड्स, टू गिव आउट फाइनेंशियल ग्रांट्स टू द स्टेट्स. उस पर्टिकुलर ग्रांट्स में से ऑल जितना भी पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, उसका 11% it's 11% जम्मू एंड कश्मीर को जाता है. इवन दो दे हैव ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 11% पैसा पूरे केंद्र सरकार का जो ग्रांट जो पे करते हैं स्टेट राज्य सरकारों को, उसमें से 11% जम्मू एंड कश्मीर को मिलता है. और ये पर्टिकुलर प्रोविजन, दिस प्रोविजन ये इस चीज से सबको इस पर्टिकुलर प्रोविजन से सबको प्रॉब्लम है. सारी बाकी राज्य सरकार, बाकी केंद्र सरकार itself, they all are they criticize this particular aspect, they criticize this particular feature in the state of Jammu and Kashmir कि उनको even after having 1% of the population, why do they get 11% of the state's funds? So these three reasons are why Article 370 has been criticized. Number one was because J&K का आर्टिकल 370 से ये इंप्रेशन मिलता है कि वो पूरे कंट्री से अलग है, परे है. एंड सेकेंड कि डिसऑर्डर, देयर इज ग्रेट डिसऑर्डर. तुम्हें पता है कि कितना कियोस है जम्मू एंड कश्मीर में. उसके ऊपर लीडर्स हैव ऑलवेज बीन डिमांडिंग, दे कीप डिमांडिंग ऑटोनॉमी इन द स्टेट, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस ऑटोनॉमी से कितना फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगा. ठीक है. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट रीजन व्हाई the Article 370 has been under criticism is because J&K, even after having 1% of the India's whole population, उनको 11% state funding मिलती है. So this was the criticism of a special provision that has been given to the state of Jammu and Kashmir. Now with that we come to an end of our chapter.